Welcome to the show, Tejaswini. Thank you. In fact, Sqn Ldr Tejaswini Upadhyay. Thank you for being a part of this and telling us how the process of healing begins. So, as I told you, we want to create a support system for all the Veer Naris, and this is what it is all about. So let us first begin by, I've read your article, Elephant in the Room, which you have also graciously contributed for the veteransindia.org site. So I want to first begin by talking about Wing Commander Vikas Upadhyay. I want to begin about talking about him as a person. Right. First of all, thank you so much for calling me over. It's my pleasure. And I think it's a great initiative that you people are doing. And this Veterans India is going to be, it is one of its kind. And I'm sure it is going to be of great help to everyone concerned. About Vikas. Well, he was a thorough professional, so I'll leave it at that. As a person, he had different roles to play, So he was a doting father, very devoted and dedicated son, very loving brother to his sisters. And for me, he was not my, more than my husband, he was my best friend. So as a person, he was very, very down to earth, humble. And, the best compliment he ever got once at work was his senior said that he could compare Vikas to Hanuman, dependable and trustworthy. So those were his, core qualities. And so as a person, I mean, he was a true gentleman. And what more can I say? Yeah. So you two meet. Now you meet. Yeah. So I've served in the Indian Air Force. So my first posting was Jamnagar, and he too was there. That was his first posting as well. So we met there in the bachelor's block. Yeah. So our first encounter was he was already there, and I then got posted in there. So I remember we met in the corridor only. Yeah. Somebody introduced us, and that's how. And then how did the things unfold? You are from South India and he's from North India. What happened after that? And how did the love blossom? So for me, it was, for both of us, it was love at first sight, which we admitted later. Okay. I don't know, I took a sudden liking for this guy, and he also says the same. He also used to say the same. So I literally felt a tug at my heart, okay, when I saw him. Then I would look for opportunities to, look for him around, in and around, mess mein, kabhi khana khate waqt and all that. And he too did the same. Then it was actually our friends who, kind of acknowledged this, that these two like each other, and they brought us together. Initially, we were friends, and then we realized that, we could be more than friends. So that's how it blossomed. Otherwise, but it was a very low key thing. We both as persons, we're not, over the top kinds. So it went on very smoothly, gradually. Then finally we decided to get married. There was some reservation from his side of the family, because nobody had an inter-caste, interstate marriage. My folks were okay with it. So finally we managed to convince all, and we had a wedding in North Indian style in Delhi. This was way back in 2007. Yeah. Well, now I have a clear picture of how Wing Commander Vikas Upadhyay was. And अभी मैंने उनके बारे में काफी सुना है. मेरे भी काफी, हम लोग के काफी common friends रह चुके हैं. And जो भी आपने बोला यहाँ पर कि the kind of person that he was, I think it's 100% true, because मैंने same चीजें उनके बारे में सुनी है. एकदम same चीजें. He was a hero, Tejaswini, and we are very proud of him. कैसे, जब when you lost him, how did you find solace? I don't want to talk about the day you lost him, but then after that, what happened? आपने कैसे strength पाई? क्योंकि आपकी एक बेटी भी है. आपको आगे, obviously, the life had to go on.
where did Right. that strength come from, and when did that strength actually come? Whenever अभी कभी इतना बड़ा हादसा जब किसी के साथ होता है तो immediately आपको realize नहीं होता है कि what has hit you. You know, it takes a time to sink in. So the same thing with me. Initially I was, just taking, I was in charge, I was taking control of things because I knew, I heard it, but it feels surreal, it doesn't feel real at all for a few months at least. So acceptance बहुत बाद में आया. I was not in denial also, like I knew it has happened, but then for the gravity to hit me it took some time. Probably when everything उसके बाद तो there was no time to think, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहा. और जब एक 1.5 महीने बाद जब मुझे time मिला to myself, when I was, I went back to Barrackpur where the accident had happened, that was when I realized ki what a big loss it is and how it is going to affect me. Till then तो कुछ I was just doing things that people were telling me कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये. So when it finally hit me, and the sad part is like तब कोई नहीं था मेरे पास. ओके जब मुझे शुरू में सब थे फ्रेंड्स. नॉट दैट इट इज एनीवन्स फॉल्ट, इट इज जस्ट दैट जब मैं अकेली थी तभी मुझे उसकी मतलब वो आई अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. बट देन you don't have a choice. Like you said, I have a daughter to fend for. So मुझे उठना ही पड़ा. मतलब मुझे I couldn't give in or anything. Okay, then I decided that, and also what, I knew that for me to get back on my feet I need some purpose in life. हाँ, I was एक बीच शुरू में ऐसा हो गया था कि मैं अब क्या करूंगी. I had negative thoughts in mind that बेटी और मैं दोनों का जिंदगी ना बेकार, I mean there's no point करके. But the minute I realized that Vikas, I was privy to all the dreams that he had for us, for our daughter, for our parents. So the minute I realized that I know what he wanted in life, and why don't I make that the purpose of my life now, and spend the rest of my life fulfilling it. Okay, that was when I started ki I need to set my life right now. That is what he'll be happy if he sees me doing that. कि जो हमने सपने एक साथ देखे थे वो मैं पूरा करूं. Not for anyone else, for myself and my daughter. So maybe that was a turning point when I realized that I need a purpose in life, and I found it. Basically, at the moment, it was to बेटी को बड़ा करना. Okay, and all my focus is on her right now. And probably when she reaches a particular stage, I'll take on something else. I know that there's a lot of things to do, but that sense of purpose, that is when you realize that life goes on and you have to live it and make it worthwhile. Yeah. और ये स्टेज टिपिकली कितने महीनों बाद आती है जब आप एक्चुअली बैठ के वो रियलिटी को सोक इन कर सकते हैं? Actually there's no timeline for healing or ये सब कब आता है. It must be different for different people. I can only tell from my experience that एक तो and what I'm telling you now is in hindsight. मतलब ये सब मैं experience करने के बाद बोल रही हूँ. तब मुझे ये समझ नहीं थी जब okay, but it is very important to grieve. दुख mourning जो बोलते हैं ना, that is very very important. Many people skip that and they think that नहीं जल्द से जल्द जिंदगी को ना फिर से पटरी पे लाना है. But that doesn't happen like that. It doesn't work. You have to grieve. That is important. Only when you grieve to the fullest, that is when healing begins. Like if you don't, अगर आप फटाक से आप कुछ किसी चीज में लग गए just to divert your mind and to keep your mind off that what has happened, then you will till the time you don't accept it, healing will not begin. So the key is to not to be in denial and to accept it. आपको पहले तो ये अपने मन को बताना पड़ेगा कि ये हो चुका है और अब there is no way back. Okay, so once you realize that, I guess you start healing yourself. It's a natural process.
it starts, then you start thinking of ways and means to find solace, find peace. तो फिर आप आपके मन को जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करते हैं और तरीके ढूंढते हैं, आई थिंक। तेजस्विनी, जैसे आपने कहा यू हैड अ सेंस ऑफ पर्पस, और आपको था, आपके मन में था कि नहीं, मुझे विकास के बहुत सारे ड्रीम्स थे आपकी बेटी के, तो आपको वो कंटिन्यू रखना था, आपको आपको वापस अपनी जिंदगी पटरी में लाना बहुत ही जरूरी था। yes. कितने केसेस में ऐसा होता है कि बहुत लोगों के सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता ऐसा कुछ, बिकॉज आपके बच्चे बाहर चले जाते हैं, आप अब एक ऐसी स्टेज पे होते हो व्हेन योर पेरेंट्स आर आल्सो वेरी ओल्ड, और मे बी दे आर नॉट देयर, यू नो, एंड या फिर आपके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, दे आर नाउ मैरिड ऑफ इनटू देयर ओन होम्स, तब क्या कर सकते हैं? Personally I feel you can give back to society, है ना? If you don't have any personal agenda या फिर goal, then why not work towards the betterment of society? ऐसा कुछ ना कुछ तो सबको मिलेगा ही, there is, it's not that purpose नहीं है। So अगर पर्सनल कमिटमेंट्स नहीं है, then I think it's time to give back to society. तो आप कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट मैं अभी कुछ ही दिन पहले अजय पांडे की एक बहुत अच्छी बुक है, यू आर द बेस्ट वाइफ, वेयर ही लूजेस हिज वाइफ, इट्स अ ट्रू स्टोरी। उसमें भी एंड में हिज सेंस ऑफ पर्पस देन बिकम, बिकॉज़ दे वर अ यंग कपल and they really wanted to have a baby, and his wife was very fond of children. So then he found his sense of purpose in giving back to the society through orphanages. वो orphanages visit करने लग गए और बच्चों के लिए कुछ कुछ करने लग गए। तो आई थिंक यस, यू आर करेक्ट, बिकॉज अगर आप नहीं, आपके पास कोई ऐसा कोई एकदम क्लोज सेंस ऑफ पर्पस, देन यू कैन फाइंड द सेंस ऑफ पर्पस इन द सोसाइटी। Yes. एंड आप come to everyone slowly, मतलब किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक आई सेड, ये जरूरी नहीं है कि इतने टाइम में ही आपको रियलाइज हो। यू शुड गिव योरसेल्फ फुल टाइम टू हील, ओके? किसी भी चीज में इमीडिएटली जुटना नहीं चाहिए। यू हैव टू, पहले आपको अंदर से अपने आप को ठीक करना है। फॉर दैट, यू नो, इट इज, यू हैव टू टेक योर टाइम। कोई भी कुछ भी बोले कि इतने टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक यू आर इन द सेम स्टेट, that doesn't matter. It's different for different people, you know. So you should defend your rights to uh, take time to heal. It is not कि कोई कह रहा है इसलिए मुझे 1 साल के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। It doesn't work like that. किसी को 3-4 साल लग सकते हैं, किसी को 10-15 साल भी लग सकते हैं, but let them be. वो अपने आप ही, हाँ, it will take its own course of time to get तेजस्विनी, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस था, दैट इज वन, बट और क्या चीज आप कर सकते हैं टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग? हाउ कैन यू, आपने कैसे अपना सोलेस, हाउ डिड यू फाइंड योर सोलेस? वो एक पीस कब पॉइंट आया उसके? I started reading a lot on the subject of life and death, life after death and all such topics, okay? So basically मुझे समझना था कि because this was the first time in life that I had even encountered the death. मेरी फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव या किसी का भी मैंने डेथ भी नहीं देखा था, एंड अचानक से इट वाज माय सोलमेट, माय हस्बैंड whom I lost. So I actually had to understand what death is, है ना? So I started reading. I read a number of books which gave me a different perspective. उससे ना मुझे ये समझ आया कि ये सब मतलब that is when I feel तब तक मैं एक illusion में रह रही थी कि ये life है, but इसके बाद मुझे ये realize हुआ कि death is a reality of life, कि सबको एक ना एक दिन आना ही है death, and किसी को पहले किसी को बाद में. And if you look at someone's life, if it has been purposeful, like if you take Vikas's life, he did live a short life, I agree, but it was such a meaningful one. उनकी जिंदगी, उन्होंने कितना, you know, he's left behind so much of goodwill for us. That means every person he came across in life, he has left an impression on them. अभी भी कोई भी मुझे फोन करता है तो they talk only about his goodness. So that is, you know, the quality of life matters, not the time. ये सब चीजें मुझे पढ़ने से रियलाइज हुआ कि ये सब, यू नो, कि डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन इनटू अनदर डायमेंशन in life. So
probably I took solace in spirituality. Like I on these concepts gave me a new perspective to life and death. So that is when I began to heal. I won't claim that I've healed totally, but then I'm inching forward every day. So that is, I take pride in that, that I am making progress. And you write wonderful articles as well. I mean, I'm sure writing also gave you. Yeah. Writing was like I started it off like a therapy, though I was into writing in my college days, but I had not pursued it, or I kind of I wouldn't find the time in between. But the day I landed in my place after the accident, the first thing I did was I asked for a diary. I um, asked someone to get me a diary, a big fat diary, and I started writing. So writing helped me. I think it's like Hmm? you can bear your feelings, and all what is heartfelt you can note it down. तो इसका फायदा ये है कि कई बार ना हमारे मन में डर रहता है कि मैं इतनी सारी मेमोरीज हैं, कहीं मैं उनको भूल ना जाऊं, या विद टाइम. सो वंस यू राइट डाउन, यू हैव इट फॉर लाइफ. आपको ये पता है कि आपने अच्छी मेमोरीज रिकॉर्ड कर ली हैं. whenever you want, you can go back to them, read it and feel happy. एंड इवन इफ इट्स समथिंग सैड, व्हेन यू आप लिखते हैं ना, तो आपके मन से बोझ उतर जाता है. इट्स लाइक यू हैव अनबर्डन योरसेल्फ ऑन पेपर, अगेन यू आर क्लियर, एंड देन you feel it's a really good feeling, like catharsis. So I took to writing may help, writing and reading both help me. तेजस्विनी, कितना जरूरी है एक पर्सन का जिसने ऐसा कोई दुख झेला है टू इंटरैक्ट विद सिमिलर पीपल, वो कितना जरूरी है और कितना सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिलता है उससे. बहुत 100%. जी. Yeah, because you only relate at that point in time. जैसे कोई और कुछ भी बोल रहा है ना, it doesn't make sense. You feel that loss is yours. You are so much into yourself at that time कि आपको लगता है कि कोई भी अच्छे एडवाइस देना भी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे मीन वेल, नो. वो तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि तब उन्होंने जो बोला था मेरे अच्छाई के लिए था. बट एट दैट मोमेंट आपको नहीं सुनना है कुछ भी ना. You won't relate to them at all. You feel that the loss is mine, इनको क्या है. तो at that time अगर कोई who has undergone the loss speaks to you, then you want to listen to that person because you trust them blindly. आपको पता है उन्होंने सेम दुख उनके ऊपर गुजरा है, तो you feel I can listen to this person. So it's very important that you connect with somebody like that. And I was fortunate. I had a friend who connected me to somebody like that. So उनसे मैंने बात की आधा घंटा 1 घंटा उस दिन. This must have been 2-3 days after the accident. And I felt कि अगर ये इतना दूर गई हैं ऐसे हादसे के बाद, तो even I have hope. I can also, I know there's a way forward. Otherwise, at that moment, no, you're feeling very hopeless and desperate. That is the, so it's very important कि ऐसे सेम लोग ऐसे लोगों से बात करें. या एक्चुअली हम यही यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तेजस्विनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी बातें सुन के कहीं जो और कोई महिलाएं हैं वो भी ये, नॉट ओनली वीर नारी, कोई भी महिला जो है वो आपकी बातों से काफी स्ट्रेंथ डिराइव कर सके. तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ एग्जैक्ट कैसे हीलिंग स्टार्ट होती है, सो दैट मे बी शायद ना जानते हुए उनको शायद पता ही नहीं है कि ऐसे करके वो हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. मे जैसे आपने बताया कि किताबें पढ़ रहे थे आप लाइफ और डेथ के ऊपर, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे ट्राई इट नाउ मे बी दे आल्सो फाइंड देयर पीस in reading or writing. So it's all about hit and try. So बच्चों के लिए तेजस्विनी कैसे, बिकॉज आपकी बेटी काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि वो जान सके कि आसपास क्या हो रहा है. How do you make them deal with the trauma? Yeah. So my daughter was 7 years old when this happened. तो in a way I am blessed because मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ से वो समझ पहले से थी. I didn't have to do much, but कई बार मैंने I had this one approach that I should not keep her in the blind. I should tell her everything. तो I used to उसको जैसा है वैसे ही बताया था. But later I realized
एक 1.5 साल बाद मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी. I thought I needed help and I went to him. So he told me, which I want to tell others, that till the age of 12 children can't they can't they don't have the capacity to take pressures. So उनको हमेशा हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देने हैं. जैसे कि अगर इफ यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव फेस द लॉस ऑफ वन पेरेंट, अगर दूसरा पेरेंट भी वीक पड़ जाए तो उनके लिए बहुत खराब चीज है, विच आई डिडंट रियलाइज टिल आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी दिस. सो उसके बाद तुरंत यू नो ही टोल्ड मी जस्ट शो योर चाइल्ड योर स्ट्रॉन्ग साइड ऑलवेज, विच आई हैड ऑलरेडी फेल्ड. ओके, मेरे से 1-2 बार हो गया था कि मैं उसके सामने रो पड़ी थी. तो देन ही सेड अभी तक उतना डैमेज नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल डू सम डैमेज कंट्रोल, एंड अब से आप बस उसको अपना स्ट्रॉन्ग साइड प्रोजेक्ट कीजिए ताकि वो यू नो शी शुड बी होपफुल अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड. उसको ये इंप्रेशन, क्योंकि 12 साल के अंदर के बच्चों को बहुत मैटर करता है कि दे लुक अप टू दिस वन पेरेंट दे आर लेफ्ट विद. सो उनको अगर उनके सामने अगर हम रोएंगे धोएंगे तो उनको लगेगा कि टोटली होपलेस, कि पापा भी नहीं है और मम्मी का भी ये हाल है. तो यू हैव टू, बच्चों के साथ डील करने के लिए यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग. आपका जितना भी दुख है आप बिहाइंड द डोर्स अपना बाथरूम में रोइए, कहीं भी कुछ भी, बट डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड. एंड यू शुड टेल द चाइल्ड दैट द वर्ल्ड इज स्टिल अ गुड प्लेस एंड दैट यू नो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू लाइफ. ऐसी चीजें उनके सामने बोल के उनका हौसला अफजाई करना चाहिए. देन दे विल यू नो, आप जैसे हैं वो वैसे ही होंगे. So if you are insecure, they will become insecure. So it is your job to make them feel secure. So ये है बच्चों के साथ. If अगर बड़े बच्चे हैं तो खुद ही समझ जाएंगे, but otherwise if they are of that age, no impression, उनको जिंदगी भर ये रहेगा कि वो loss ना, they won't overcome it. So you have to, as a parent, as a single parent, you have to be strong and show only your strong side to the child. Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने तेजस्विनी, एंड आई एम श्योर ये काफी लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि यू आर नॉट एक्चुअली सपोज टू क्राई और एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ, इनफैक्ट अदरवाइज ऑल्सो. काफी बड़ी बात आपने कही कि 12 साल के बच्चे, ये मुझे भी नहीं पता थी इनफैक्ट ये बात, कि बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो लाइफ के डिफिकल्ट चीजों से गुजर सके. वो दिखाते हैं, they do because they don't want to hurt you, because they love you and उनको उनके सामने आप ही हैं, तो it is your duty to understand and not show that you are vulnerable. उनको जितना हम strength हम दिखाएंगे वो उतना ही they will latch on to you, and you know they हम जो घर में माहौल हम रखेंगे ना तो उनको उसी से hope मिलेगा. घर में अगर हर वक्त मायूस हैं, दुखी हैं and you are hopeless, then they will pick up those vibes only. Yeah. So I realized that immediately as soon as the doctor told me, and uske baad se I've made a conscious effort not to tell her any of my troubles, at least till she grows big. I'm sure when she's badi ho jayegi to khud samajh jayegi aur meri friend ki tarah ban jayegi. So till then I need to protect her and make her a strong person, so which I try to. Yes. तेजस्विनी, एक और जो चीज मैं जानना चाहती थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वजह से आपका दुख कम हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये कैसे करना है. इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने मेरे सामने जब एक बहुत बड़ा हादसा देखा था जहाँ पर एक फाइटर पायलट जो थे, ही गॉट मार्टायर्ड, एंड आई डिडंट नो, मतलब मेरे में इतने गट्स भी नहीं थे कि मैं उनकी वाइफ से जाके बात कर सकूं, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि मैं बात क्या करूं कि शी विल फील बेटर. तो आपको क्या लगता है कि आसपास जो फ्रेंड्स और फैमिली है वो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करे सो दैट यू फील अ लिटिल बेटर? जरूरी, अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली पास में है तो इसी जाके मिलना चाहिए. मिलने से नहीं कतराना चाहिए कि वो क्या सोचेंगे, भले आप एक शब्द ना बोलें, बट योर प्रेजेंस मैटर्स. जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग आए थे वहां पे, और आप भले ही आई मीन देयर इज नो नीड टू गिव उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स अश्योरेंसेस, कि झूठी दिलासा देने की जरूरत नहीं है, उससे हमें अच्छा नहीं लगता. बिकॉज बट इफ यू जस्ट
are there, your presence. बस उनके पास जाके बैठ जाइए, एंड उनको अगर कुछ कहना है तो उसको सुनने के लिए एक you lend an ear, that will be enough initially. Okay, क्योंकि तब कुछ भी, like I told you, you are not in a state of mind to listen to any piece of advice. आपको कोई आकर बोले कि सब ठीक हो जाएगा या भगवान की मर्जी थी एंड ऑल दोस थिंग्स ना, वो उनसे और चिढ़ मचती है और आपको अच्छा नहीं लगता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट इंडिविजुअल दैट मच टाइम टू रियलाइज कि क्या हुआ, और देर इज नो रिवर्स नहीं हो सकता जो हुआ है. तो बस ये कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली की वी आर अवेलेबल फॉर यू, और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो दिल खोल के बोलो, हम बैठे हैं सुनने के लिए. दे कैन एक्ट लाइक अ पंचिंग बैग में भी, कि मैं हूं इधर, तुम्हें जो मर्जी करना है करो, दैट विल बी इनफ. नो एडवाइस. एंड देन बाकी तो क्लोजेस्ट फैमिली तो होता ही है ना, उनसे तो वो तो दे विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. सो आई थिंक फ्रेंड्स जस्ट हैव टू स्टे probably a safe distance, but make their presence felt. That's all. तेजस्विनी, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगी, is there happiness again, the similar happiness that you felt earlier? Can you find that happiness again? Well, that depends. But yes, why not? From what I have heard from others, definitely happiness जरूर आएगा जिंदगी में. But life doesn't remain the same. Life काफी change हो जाता है, तो this happiness probably comes in a different form. आप उनके साथ जो था वो दोबारा रिक्रिएट नहीं होगा, बट द थिंग इज आपको उनकी अच्छी मेमोरीज जो है ना, दैट यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू दिस न्यू लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड. देयर इज नथिंग लाइक मूविंग ऑन. आपने कहीं सुना होगा, है ना, मूविंग ऑन नहीं होता, मूविंग अलोंग होता है, एंड मूविंग अलोंग विद देम. उनको साथ लेके ही चलना पड़ता है इस नई जिंदगी में भी, बट सिर्फ अच्छी बातें. अब लाइक आई सेड, शॉर्ट लाइफ था बट मीनिंगफुल लाइफ था, उसमें हमें कंटेनमेंट ढूंढना पड़ेगा कि he lived on this earth for a purpose. उनका खत्म हो गया, he's gone, but इतना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ गए हैं, इतनी अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, उसमें हमें तसल्ली ढूंढ के हमें we have to look for a way forward. But happiness will in different forms, and उनकी अच्छी यादों का happiness तो रहेगा ही. I mean, he'll be a part of us always, integral part of our lives. वो तो हम we can't do away with that. So that's how you find happiness, by integrating his memories into this new life of yours. जैसे कि आपने मुझे तब भी बताया था कि कैसे आप लोग, आप और आपकी बेटी अभी भी उनके बारे में काफी बातें करते हैं, आप लोग इनफैक्ट जोक्स में भी उनकी बात करते हैं और हंसते हैं, and it's as if you are laughing with him. Maybe he is there somewhere laughing with you. My daughter thinks of him as her guardian angel. वो कई किस्से हुए हैं जहाँ पे उस एक्सीडेंट के बाद, जब कि मुझे रियलाइज हुआ कि वो she has kept him alive in her heart. So I felt so happy. एक बार उसका एक स्केटिंग कंपटीशन था, उसमें उसके जो गार्ड्स थे ना, जो प्रोटेक्टिव गार्ड्स जो पहनते हैं, वो निकल रहे थे बार बार. सो आई टाइड इट टाइटली फॉर हर बिफोर द कंपटीशन. फिर वो कंपटीशन खत्म हुआ, वो जीती, वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मम्मा वो गार्ड एक बार भी नहीं लूज हुआ, आई थिंक पापा वाज होल्डिंग इट. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट शी थिंक्स दैट ही इज देयर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वो ऐसे पॉजिटिव वे में सोचती है कि वो हैं और उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं. अभी भी जब भी कुछ उसको व्हेन शी फील्स ट्रबल्ड, वो एक रूम में जाती है, कुछ देर शी स्पेंड्स टाइम, and once she comes out she's okay, and she says that she it's all in her imagination, but she has made him her strength. मेरा और उसका झगड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद रूम में गई, बाहर आई और बोला कि पापा ने मुझे तुमसे सॉरी बोलने को कहा है, और उन्होंने कहा कि तुम भी सॉरी बोल दोगी. तो that melted my heart. She came, she said, and she properly said sorry, and I told sorry to her, and हमारा झगड़ा resolve हो गया. So even today Vikas plays a major role in resolving our problems. Wow. So yeah, this is so not that she, a beautiful example that you
he still in fact उसके जहन में he is still there and as a source of strength. So that is the best part. Great. It's such a wonderful thought and I hope कि आपकी इंटरव्यू से बहुत लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे आप फिर भी अपने बच्चे का स्पेशली जो बचपन है वो ब्यूटीफुल बना सकते हैं Yes. in the manner that you told me. So thank you so much, Tejaswini. Is there any message for other Veer Naris and veteransindia.org? How can it really help Veer Naris create a support system? I will take your advice on that. Like I hope you're making it interactive in some way. Like once, I'm sure you have many ideas. So I would only like to wish you all the best for the moment. And I'm, anytime anything required, I would like to contribute to your cause. So nothing, ऐसे कुछ advice देना नहीं चाहूंगी, पर ये है कि मैं आपके support में खड़ी हूँ, and आपको कभी भी मुझसे कुछ चाहिए तो I'll not hesitate. I will, yeah. Thank you, Tejaswini.